Today is 5th December 2020 and today is observed as World Soil Day. So this year the theme of the World Soil Day is Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity. So soil is a living entity, and how we can make soil live, and live means it's a flora fauna present in the soil. So how we can protect so that the biodiversity is maintained. So today I'm going to tell you something that needs to be done to protect soil biodiversity, and in the context of climate change and residue burning all over India and elsewhere in the world. So if you burn the residues, then definitely by the time of burning you are killing lots of microorganisms and other small animals or flora present in the soil. They are also killed, and to revive that it may take some time. But when the crop is grown and the residues are present, let them be there. So to make the soil alive, we need to provide those flora and fauna and the microbes food, and where they will get the food. And this is what actually conservation agriculture is all about. When you talk about conservation agriculture, then that time probably we need to protect the soil. As you know, carbon is the source of energy for the microbes. So to protect soil biodiversity, if you follow this type of agricultural practices where you have different kind of rotations, where you have legumes, where you have cereals, and we put back those residues back. वो मिनरल जो भी आता है, तो उसका मतलब उसका एक कोई जो आपका जैविक जो जीवाणु है वो कुछ ऐसे क्रिया करता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर से जैविक जो भाग है उससे का नाइट्रोजन को सप्लाई कर देता है पौधे के लिए, तो उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे जो दलहन में वो इकट्ठा करता है नाइट्रोजन उसके जड़ में गांठ बना के। तो किसी तरह हम लोगों को ये जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। उसका मुख्यतः 3 तरीका है हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो कंपोस्ट बनाते हैं, दूसरा एक हमारे हैं कि संरक्षित कृषि बोलते हैं, संरक्षण कृषि, जिसमें जो पुआल पराली वगैरह है वो जमीन में ही रह जाए, वो बाहर ना जलाया जाए ना फेंका जाए। और तीसरा एक और है जो बायोचार बोलते हैं, जो कि वो एक कम ऑक्सीजन में उसको जलाने के बाद वो काली चीज़ को वापस कर देता है। वो ज़्यादा आप लोग के यहाँ अभी ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ है ये जो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ावा देना है, क्योंकि इसी हिसाब से इस बार थीम रखा गया। जो विश्व खाद्य संगठन है वो बहुत बड़ा वो वर्ल्ड लेवल का काम करता है, वही लोग रखते हैं, और सब बड़े बड़े लोग मिलकर इसको रखा। इसको कैसे जमीन का जो सजीवता है, जो संचालन क्षमता है, वो ये जीव के द्वारा ही बना रहता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसको आप जितना आगे कर सकते हैं करिए, ताकि आपका जमीन अगले पीढ़ी के लिए भी इससे और इससे ज़्यादा उपजाऊ रहे। वो हमारा मतलब है जो डॉक्टर एबी सिंह आप लोगों के साथ इतने दिन लगे हुए थे, वो और ज़्यादा उसका जो संपर्क है, उसका जो निकटता है वो और बढ़ने का तो बढ़ जाएगी नेचुरली। और वो थोड़ा अभी क्योंकि हेड भी बन गए तो उस हिसाब से और एनर्जाइज करेंगे इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे जो काम चल रहा था मुनवर भाई के यहाँ, वो मेरी किसान वैज्ञानिक परिचर्चा का यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, और जिसमें ये रखा है कि भाई हम किसानों के बीच में जा करके और वैज्ञानिक लोग ये बताएं कि अपनी मिट्टी को किस तरह से हम स्वस्थ बनाएं। और इस साल का जो थीम रखा गया है कि हमारा जो इंग्लिश में है कि टू कीप सॉइल अलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी, मीन्स कि हम मिट्टी को कैसे जीवित रखें और उसको जो है उसकी जैव विविधता को बनाए रखें। ये जो मतलब जो हम लोगों का थीम क्या पूरे वर्ल्ड सॉइल डे का ये थीम रखा गया है, जिसमें सभी का मकसद है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए, किसानों को मत, कि जो हमारी मिट्टी में हम लोग कई बातें कहते हैं कि हम रसायन यूज कर रहे हैं, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उससे उत्पादन नहीं हो रहा है। तो किसानों की भी ढेर सारी समस्याएं हैं, और जहाँ पे वो खाद 1 बोरी बजाय 2 बोरी डाल रहे हैं,
तो उनको ये समझाना है कि हमारी मिट्टी जो है जीवित है। इस जीवित का मतलब कि हम लोग कहते हैं कि जो साइंस में कि अगर एक स्पून मिट्टी लिया जाए तो उसमें लाखों जीवाणु होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस मिट्टी में ना रहें तो जो आपके जो पोषक जैसे यूरिया डालते हो, यूरिया ऐसे नहीं कि पौधे डाल के ऐसे खींच लेते, हमारे ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया फंजाई जीवाणु होते हैं जो उनको चेंज करके पौधों को अपटेक कराते रहे, सहायता करते रहे। तो ढेर सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स कहाँ होते हैं? इन जीवाणुओं के माध्यम से पैदा होते हैं। तो किसान भाई ऐसा है कि विषय बहुत बड़ा है और इसमें आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि हम लोग जो है जो चीजें कर रहे हैं। तो आज हमारा सोचने का ये विषय हो गया पूरे विश्व में, ना कि भारत में, कि हम मृदा स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, पहले हम लोग खेतों में कहते थे केचुआ मिलता है, अभी आपके खेत में केचुआ नहीं। और केचुआ इसलिए नहीं कि उनका भोजन ही आप नहीं दे रहे हो, और बिना भोजन के तो कोई भी चीज नहीं रहेगा। तो कहने मतलब केचुए का भोजन कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ नहीं डालते। उसी तरह से मैंने कहा कि एक चम्मच मिट्टी अगर हाथ में, एक स्पून इसमें हाथ में लो तो उसमें कितने मिलियंस जो है जीवाणु हैं। अब वो जीवाणु ऐसा नहीं कि आपके लिए हानिकारक, वो आपके लिए फायदेमंद है। जितने भी चीजें होती हैं और उन जीवाणुओं का भोजन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। तो एनर्जी सोर्स जो है उन कार्बनिक पदार्थ। तो हमारा यहाँ ये बोलना है कि आप किसान भाइयों, मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको कुछ रिकमेंडेशन जो हमारे वैज्ञानिक लोग बनाते हैं या सूचित देते हैं न्यूट्रिएंट यूज का और चीज़ों का, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के देना होगा। और कल भी आपको किसान भाइयों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल यहाँ के जितने किसान बैठे हैं, कल हम वो तारा सिमनिया के पंचायत भवन में आप लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करें। उसमें हमारे और भी स्पीकर जो टाइम मतलब रहेगा, इसलिए आज यहाँ ज़्यादा टाइम हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कल आपका 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में हमारे एक सभी स्पीकर यहाँ जो यहाँ भी बैठे हैं, कुछ बाहर के, आपको उसमें मैसेज देंगे कि हम सॉइल हेल्थ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा डिटेल में किया जाएगा। लेकिन अभी हम ज़्यादा मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड it is important to maintain the soil health and sustain its productivity by proper soil management like crop covers. You should go for conservation tillage, minimum tillage, go for adding organic amendments, and also by doing all these activities we are going to maintain the soil biodiversity, its life, which is the life of soil, and through that we are also going to have a healthy human life and human health. Thank you.
tell not microbes are important for micronutrient availability in soil. That will be Okay. proper way to Good. speak and explain. Because the availability of micronutrients in soil is influenced by several factors, and these microbes play important role in making the micronutrients available to the plant and making those micronutrients available. How they do? These microbes secrete some organic substances which form complexes with macronutrients, and thereby it is easily absorbed by the plant roots. Moreover, these microbes also help in mineralization of micronutrients from organic matter, organic residues, compost added to the soil. And there are different microbes, and we are in the process of unraveling the roles, different roles in making this micronutrients, especially iron and zinc availability, so that it can be better absorbed by the plants. Especially in soils where we are not applying micronutrient fertilizers, the native micronutrients can be made available to the plants by the microbes, which needs to be studied in the current near future. That is an unraveled and unexplored area in the micronutrient and microbe interaction in soil plant system. Thank you. Thank you. Coming to biofertilizers, I think they are one of the source to keep the soils healthy. And today's context, like to keep the soil alive, we have to work on the diversities of the soils for different areas. So as a researcher, I feel that along with organic management and other agricultural practices, we have to apply and think of far away research projects for biodiversities. Along with that, biofertilizer is one aspect. So I think that applying biofertilizers to the soil, we will on this World Soil Day, research will take us to a long way, and we can have a healthy soil and healthy life. Stay safe, stay healthy during these COVID times. साथियों, आज मृदा दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, और हमारे देश में मृदा दिवस मनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारी मिट्टियों का गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है लगातार, उसके बारे में हमें पूरे समस्त समाज को सचेत करना है, उन्हें अवगत कराना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि किस प्रकार हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से हम अपनी कृषि करें, अपनी कृषि में सभी चीज़ों का समावेश करें, जिसमें जैविक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हमारी मृदा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, और उसके साथ साथ हम संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें,
अपनी कृषि में हम विभिन्न कृषि प्रणालियों को जगह दें, जिससे हमारे जिन कृषि प्रणालियों से हमारे मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, जैसे हम अनाज के साथ दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें, ताकि इन सभी प्रक्रियाओं के अपनाने से हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसके जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है, जीवों को आश्रय देने की उसकी एक क्षमता है, उसमें लगातार वृद्धि होती है। All a very happy World Soil Day. As we all know how important soil is, our survival is completely depends upon the soil, and we all know getting a 1 centimeter of soil, it takes millions of years. So we can think of how important it is soil, and also we have to think that our future generation, their survival also depends upon the soil, because if we have a healthy soil, then only we will have a healthy future also. Hello friends, once again when you talk about World Soil Day, and I did talk about keeping the soil alive and protect soil biodiversity. So you know, legume is most important crop in agriculture and in crop cultivation, and this time I can show you this is the arhar plant or the pigeon pea, and this plant is grown in rainy season and still is sown in rainy season and still it is going strong. It's been more than 5 months and still alive and kicking in the field. And this crop is when you talk about keeping the soil alive and protect biodiversity, this crop is most important, you know, one of the legumes which provides, you know, it is grown in small and marginal lands. You can grow anywhere. They are adaptable to any kind of environment, high rainfall to low rainfall, but the soil should be well drained so that there should not be any stagnation of water. But this soil, when you talk about soil biodiversity and keeping the soil alive, this crop, through the biological nitrogen fixation from atmosphere by rhizobium, they actually give enough nitrogen, and being deep rooted, it gives deeper part of the profile and extract water, whereas other crops they are not able to do. And see, in the black soil being cracking clays, still these crops are really looking very good. You can see there already cracks are developed here, but you can see the crop is at harvest almost matured, and this crop provides enough you know, microenvironment, and also it doesn't need much nutrient and doesn't need any input, and just they are grown in normal. We have not applied anything to this soil, and see that the crop is grown very nicely. So this type of crop, when you put in any crop rotation or maybe grown in any type of soil, they improve the soil fertility and thus they protect the soil biodiversity. Thank you very much.